So in any computer, you see this CPU, that is called as central processing unit. Okay, and then for any computer you require a memory. That memory could be ROM or RAM. Okay, so you require a CPU and you require a memory and you have certain peripherals. Now I had drawn a block diagram in which I had shown you print monitor and I had shown you keyboard and the mouse. Similarly, you may have a printer. So this is called as these things are called as peripherals. Okay. Now it's just like your brain, the CPU. It's just like your human brain. Now we have human brain, and then we have memory. Now for what do we need memory? What is there we store in the memory? We store certain algorithms or certain procedures or certain incidences of the past in the memory, right? Now whatever you do, you read, you write, or you do any certain thing, why you are able to do this? Because program for doing so is stored in our brain, in a memory. Similarly, if you want CPU to work, you require a program, and that program is stored in the memory. So what is the function of the memory? To store a program and constantly keep on instructing CPU what to do. So we require a memory for storing program. There are other things also for what memory is used. One thing is for storing a program. Now program is, all of you know that programs are nothing but we call it as a code also, no? Program that we write, instructions that we write, we call it as a program. Then during the execution of a program or for executing that program, you require certain data, है ना? So that data also has to be stored in the memory. So you have two things to be provided to the CPU. One thing is it provides program or your code, and you require data in order to process that program. Now this is just like, imagine I have asked you to do a calculation, 5 plus 2. How will you do this calculation? You will consider first number as 5, then second number as 2, and you have a program stored in your brain of addition. What do you mean by addition? This program you have stored in the brain. So moment I say 5 plus 2, that means I am providing you data. First number is 5, second number is 2. That data I have provided. And these two numbers you add together, and the answer, which is 7, that you calculate and store in the memory again. And this is what how we do. So where is the program here? What is the program here? This program is nothing but addition. And what is the data here? This number 2 or number 5 is nothing but the data. So in the computer also, you need to store a data as well as you need to store a code in the memory. And because of that, we have two types of memories. If you recall your digital electronics, then one is code memory and second is data memory. Okay? Data memory. Code memory is the one in which program is stored. Okay? And data memory is the one in which data is stored. So here you can see there is a RAM and there is a ROM. RAM is nothing but random access memory, and ROM is what? Read only memory. That this full forms you must be knowing already, right? तो जो डेटा मेमोरी होता है ये होता है रैम, और कोड मेमोरी होता है वो होता है रॉम. That means program is stored in ROM and data is stored in RAM.
Now, when I'm asking you to add 5 plus 2, after some time, you may forget this, what is 5. Only if once you get the answer, you no more require this 5 and 2, right? So if next time if I give you 7 plus 2, then instead of 5, that memory location, you can replace that 5 with a 7 and 2 with the other number, and then you once again do the addition. So this data memory is being constantly updated. It is being written again and again. So it is read write memory. मतलब you can keep on reading मतलब यहाँ पे जो डेटा है, microprocessor is accessing that data. It is reading that data. That is called a read operation. और write operation मतलब microprocessor इसके अंदर लिखता है, मतलब स्टोर करता है, उसको राइट ऑपरेशन बोलते हैं. तो ये जो 7 आंसर जो है, दैट 7 आंसर विल गो बैक टू द मेमोरी, है ना. आंसर मिल गया, फिर आपको सेव करना है ना किधर, तो आप जाके सेव करोगे. तो आपके पास ऑप्शन है, आप रैम में किसी लोकेशन में वो 7 रख सकते हो ताकि आपको बाद में यूज हो. सो this RAM में you can, from the RAM you can read as well as you can write. Whereas in the ROM, what do you store? You store a code, you store a program. See, what do you mean by addition? That program is written in our brain already in the first standard, second standard. You have been taught that program, and that program is fed in your memory. And that program is not supposed to be erased. The way you erased 5 and 2 and replace those 5 and 2 with the new number, this program which you have written for addition, this addition program which is stored in the ROM cannot be erased. If it gets erased, there will be a problem. You will not be able to add any number in your life if it gets erased. So read only memory, which is ROM, has to be a permanent memory. Okay, it should not be a temporary memory. So RAM we call it as temporary memory, and ROM we call it as permanent memory. So the program which is to be executed again and again is always stored in a ROM, which is nothing but a code memory, which is nothing but the permanent memory. And once you write anything in a ROM, it need not be erased. It should only be read. Nothing as needs to be written again. That's why this memory is called as read only memory. You can only read, you just need to read from it, and the microprocessor is not going to write anything in the ROM. But in case of RAM, microprocessor is going to read from the RAM, and microprocessor is going to write on the RAM. Now you know that this memory consists of RAM and ROM, and this memory is accessed by the CPU. ये CPU क्या करता है? ये मेमोरी को एक्सेस करता है. किसके लिए? प्रोग्राम लेने के लिए यहाँ से, और डेटा लेने के लिए. So you require a bus, address bus and data bus. Okay, you require 2 types of buses, address bus and data bus. Bus मतलब क्या होता है? Signal. Bus carries signals. एक हम लोग जब सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो we show this like if there is a transistor, then we draw like this, na? Oh, this is a transistor, say for example. Okay, so from here to here, suppose I connect 2 resistors here like this. So from here, this point to this point, you have a wire. And what is the purpose of this wire? To carry signal from this point to this point. Or in this case, in this circuitry, it's an electrical signal which current, or the current flows from this point to this point. Similarly, in the microcontrollers, you need to pass on signals from one point to another point. This signal could be either logic 1 or logic 0. You have heard about it, na? Logic 1 and logic 0.
Logic 1 is nothing but 5-volt signal. Logic 0 is 0. This is what we usually consider. Okay, there are labels to it. So logic 0 and logic 1. So these signals are transferred from memory to CPU and CPU to memory. Now, what for we require two buses? One is address and another is data bus. What is the function of address bus and what is the function of data bus? Now, to understand the function of address bus and data bus, this I forgot to mention. एक लाइन रहेगा तो उसको एक सिग्नल लाइन होता है. ऐसे अगर मल्टीपल लाइंस रहेंगे तो उसको हम बोलते हैं बस. Okay, multiple lines together carrying the same type of signal is called as bus. So there could be multiple lines. Actually, there are multiple lines which are flowing from this way it is. So when I'm saying address bus, it can be shown like this. When I'm saying a data bus, it could be shown like this. But the diagram will become very complicated. So they have not shown like this. They have simply shown data bus and the single line, address bus and the single line. Remember this, wherever you find the word bus, it is not a single line, but there are multiple signals which are flowing from memory to CPU and CPU to memory. So let me tell you about address bus and data bus further. But for that, you need to understand how exactly the address and how the memory is organized. Okay. Now, ये जो memory होता है, that memory is arranged like this. That means this is one register, this is another register, this is next register, and so on. Now each register is a 8-bit type. There are 8 bits in each register. Okay, it may not be 8. Just imagine that there are 8 bits like this. So it is a 8-bit register. So next register, next register, next register, and this is the last register. Now this 8-bit memory, if it is there. Now what I'll do, I'll just take, instead of showing these many registers, I'll just show you only 2 such registers and I call them as a memory. Okay, I just take 2 such registers. Okay, I will not show you many. Let me show you first only there are 2 registers and each register is of 8-bit. So this is register 1 and this is register 2. Or I may call, instead of calling register 1, register 2, let me call it as register 0 and register 1, because you will find everywhere we will be starting from 0. Okay. So I may call it as register 0 and this is register 1. Now there are only 2 registers. Now if I need to identify these 2 registers uniquely, then I'll give address 0 and 1 to these 2 registers. Okay, so address of this register is 0, address of this register is 1. Now if this CPU wants to access register 0, then simply what it has to do, it needs a single address bus, a single एड्रेस बस मैं बोल नहीं सकता हूँ. तो एक सिंपली एक उसको वायर लगाना पड़ेगा जो सीपीयू से आएगा और मेमोरी में जाएगा. तो वो सीपीयू क्या करेगा, इट विल सेंड द सिग्नल 0 on the address bus. So when then 0 comes to this memory, there will be circuitry which will be decoding this signal and will identify that the signal is 0. So what it will do,
it will give access of this register to the microcontroller, and whatever is stored in this register, that is the data, will be placed on a data bus and will be sent to CPU. Now, as I told you, this is a 8-bit register. There will be 8 bits stored in this register. So once microcontroller, the microprocessor, the CPU, identifies this memory location by sending 0, 8 bits which are stored in this register are going to be transferred to CPU. So 8 lines यहाँ पे चाहिए आपको, 8 bus lines चाहिए जो यहाँ से डेटा उठाएंगे और CPU में लेके जाएंगे. Did you understand till this much? अगर माइक्रो कंट्रोलर को ये वाला मेमोरी लोकेशन एक्सेस करना है तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, यहाँ पे 0 के बदले में वो दूसरा एड्रेस भेजेगा, और वो दूसरा एड्रेस कौन सा भेजेगा, वो भेजेगा 1. Instead of 0, it will send 1 here. We will understand that now data which is stored in this register has to be sent to CPU. So now instead of that, this thing, instead of 0, register 1 will be given access, and the data which is stored in register 1 will be sent to CPU. Now let us change the situation. Okay, let us change the situation. Instead of 2 locations, 2 registers in the memory, let us have 4-bit memory. Let us have 4 bytes है उसमें. Bit और bytes आपको पता है ना आपको meaning of bit and byte. 1 bit, 8 bit is equal to 1. 8 bits equal to 1 byte. Remember. तो 8 बिट्स है ये, इस टर्म में 8 बिट्स है, तो इसको मैं बाइट बोलूंगा. तो 1 2 3 4 4 बाइट मेमोरी है ये. तो 4 बाइट अगर मेमोरी है तो एड्रेस 0, इसका एड्रेस में 0 दिखा, इसका 1 दिखा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ये 2 बचते हैं. और यू नो दैट माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर अंडरस्टैंड्स ओनली द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड 1. तो मुझे 1 बिट एड्रेस से काम नहीं चलेगा, तो मुझे 2 बिट एड्रेस देना पड़ेगा. मतलब 0 0 0 1 1 0 1 0 एंड 1 1. ये 4 एड्रेसेस, 4 लोकेशंस को देने पड़ेंगे. तो जब माइक्रो प्रोसेसर को, सीपीयू को ये वाला मेमोरी लोकेशन एक्सेस करना है तो यहाँ पे 2 लाइन बनते हैं. ये यहाँ पे 2 लाइन चाहिए. तो माइक्रो प्रोसेसर विल सेंड सिग्नल 0 0. ओके, तो ये 0 0 सिग्नल यहाँ पे भेज दिया माइक्रो प्रोसेसर ने, सीपीयू ने. तो मेमोरी को पता चलेगा कि ये लोकेशन जो है, ये लोकेशन का डेटा, जो 8 बिट डेटा है यहाँ पे, वो डेटा लाइन के थ्रू, डेटा बस के थ्रू सीपीयू को भेजना है. और फिर अगर 0 1 सिग्नल आता है तो 0 1 मतलब एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी, इधर का डेटा जाएगा. 1 0 इधर का डेटा जाएगा. 1 1 मतलब इधर का डेटा जाएगा. नाउ इट इज रैम. ये जो रैम है, अगर माइक्रो कंट्रोलर वो एक्सेस कर रहा है तो डेटा कैन बी रीड और डेटा कैन इवन बी रिटर्न. अगर रॉम है, रीड ओनली मेमोरी है, तो हमेशा डेटा यहाँ से यहाँ ही जाएगा, प्रोसेसर से इधर नहीं जाएगा. दैट इज ओनली डिफरेंस. तो अलॉन्ग विद दिस एड्रेस बस एंड डेटा बस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंट्रोल बस ऑल्सो. तो कंट्रोल बस में अपना ये रीड करने का या राइट करने का, वो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, वो भी बताता है उसको, मेमोरी को, कि रीड करना है या राइट करना है.
तो यहाँ पे एक कंट्रोल बस भी हो सकता है, ऐसे जो इस डायग्राम में नहीं दिखाया है, ऐसे करके इसको हम बोल सकते हैं कंट्रोल बस। तो रीड करना है या राइट करना है, राइट और रीड क्या कर, सॉरी दिस इज रीड, दिस इज राइट। वो क्या करना है, वो सिग्नल भी सीपीयू भेजेगा इनको और इनको, तो उस हिसाब से वो जो ऑपरेशन है वो किया जाएगा। सो दिस इज अबाउट द बेसिक, वेरी बेसिक थिंग। तो पेरिफेरल का भी वैसे ही, जैसे मेमोरी होती है वैसे पेरिफेरल होता है। मॉनिटर इज द आउटपुट पेरिफेरल, राइट। डेटा विल ऑलवेज बी फ्लोइंग फ्रॉम सीपीयू टू मॉनिटर, उल्टा कभी डेटा नहीं जाएगा, कंट्रोल सिग्नल जा सकते हैं। फिर प्रिंटर का भी वैसे ही, प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस, सो डेटा विल बी सेंड फ्रॉम सीपीयू टू प्रिंटर। ओके, सो जैसे मेमोरीज होते हैं वैसे पेरिफेरल्स को भी एड्रेसेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू, हमने 4 बाइट मेमोरी देखा। अब अगर 4 की जगह पे मेमोरी थोड़ा बड़ा हो गया और सपोज आपके पास 8 रजिस्टर्स हैं, इंस्टेड ऑफ 4 यू हैव 8, तो आपको एड्रेस बिट्स कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। विथ 0 0 0, next will be 0 0 1, next will be 0 1 0, next will be 0 1 1, okay, next will be 1 0 0, next will be 1 0 1, next will be 1 1 0, and next will be 1 1 1। हो गए नो, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हर एक मेमोरी को एक एक एड्रेस मिल गया, यूनिक एड्रेस मिल गया, है ना। तो मतलब ये 3 लाइंस रहेंगे ऐसे, एड्रेस लाइंस। तो जब 0 0 0 आएगा, इधर का मेमोरी का डेटा इधर जाएगा। जब वो 1 1 1 आएगा तो ये मेमोरी का डेटा इसमें जाएगा, है ना। ऑब्वियसली ये इसके थ्रू है, डेटा बस के थ्रू। तो दिस इज हाउ इट इज। नाउ यू हैव टू आंसर मी, if instead of 8, if we have 16 memory locations, you got my question। पहले हमने 2 देखे, 2 मेमोरी लोकेशन के लिए एक डेटा लाइन लगता है, 4 मेमोरी लोकेशन के लिए 2 डेटा लाइन्स, 2 एड्रेस लाइन्स लगते हैं, 8 मेमोरी लोकेशन के लिए 3 लगते हैं। तो 16 के लिए कितने एड्रेस लाइन्स लगेंगे? 4 4 एड्रेस लाइन लगेंगे। मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0 0 0 एंड एंड विथ 1 1 1 1। और जैसे मैंने 3 बिट के लिए लिखा था वैसे ही 4 बिट के लिए आपको 16 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। अब मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, बोलो बोलो अभी कितने लगेंगे? 5 5। अभी और बढ़ाता हूँ, अभी 6 अभी 7 अभी करेक्ट। अब मुझे बोलो, उल्टा पूछता हूँ। नाउ इफ आई गॉट 9 एड्रेस लाइन्स, then what is the size of the memory that could be addressed? अगर मेरे पास 9 एड्रेस लाइन्स है यहाँ पे ऐसे,
ऐसे, तो कितना मेमोरी एक्सेस हो सकता है? डेटा बोलो। 512 512 512 करेक्ट। 10 है तो कितना? करेक्ट, 1024. 1024 यस, 1024 के लिए 10 एड्रेस लाइन्स चाहिए, है ना? दिस 1024 is also called as 1K. कितना? 1 kilo. Okay, in digital electronics 1K is nothing but 1024 bytes. 1 किलो मतलब 1024। ये जो मैंने ये डायग्राम ऐसे ऐसे दिखा रहा था ना मैं, तो ये कितने ऐसे 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 रहेंगे रजिस्टर्स? 1024, और इसको हम बोलेंगे 1K। तो जब 2K बोलेंगे ना तो कितने रहेंगे? 2048, और उसके लिए लाइन लगेंगे 11। दिस विल बी 4K नाउ। 1K के बाद 2K होता है, 2K के बाद 4K होता है, 4K के बाद आपका होगा 8K, फिर होगा 16K, ओके, फिर होगा 32K, और फिर होगा 64K। तो जब आप 64K तक जाओगे तो ये 12, 13, 14, 15, 16 हो जाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट, ध्यान में रखो, ये रिलेशन ध्यान में रखना। फिर से उसको रब करता हूँ। इसका मतलब है if I have 64 kilobyte memory, then I require 16 address lines. Okay, so this is the way it is. So relation is 2 raised to n. Okay, 2 raised to 16 is equal to 64K. ये रिलेशन है। तो आपको ये नंबर बताता है कितने एड्रेस लाइन्स चाहिए। 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 3 is 8, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 is 32। तो ये नंबर बताता है। नाउ for 8051 we require 16 बिट एड्रेस लाइन। 16 बिट एड्रेस बोलते हैं हम लोग, मतलब ये 16 एड्रेस लाइन्स ऐसे चाहिए अपने को अगर फुल मेमोरी यूटिलाइज करना हो तो। अभी फुल मेमोरी मतलब जस्ट नाउ वी हैव सीन 64 KB मेमोरी। अगर 64 KB रैम है या 64 KB ROM है, and if that full memory needs to be addressed, then I require 16-bit address। इसका मतलब है यहां से यहां जाने वाले कितने लाइंस रहेंगे? बोलो जल्दी, कितने लाइंस रहेंगे? बोलो। 16. 16। ओके, और डेटा बस जो है वो डेटा बस इज डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ द रजिस्टर। ये मैंने आपको बार बार बोला था, ये 8 बिट रजिस्टर है, तो 8 बिट रजिस्टर को आपको 8 लाइन लगते हैं ऐसे। तो ये जो डेटा रहेगा वो 8 लाइन से बना रहेगा डेटा बस, और ये 16 लाइन से बना रहेगा।